हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रीना कुशवाहा। आज मैं आपके सामने फिर से एनसीईआरटी बायोलॉजी सीरीज़ लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो कि केवीएस के लिए हेल्पफुल होगा। ये क्लास 12th एनसीईआरटी बेस्ड है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ फ्यू स्टेटमेंट्स डिस्क्राइबिंग सर्टेन फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। गैमेटिक फ्यूजन टेक प्लेस, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस, रिडक्शन डिवीजन टेक प्लेस, प्रोजेनी हैव सम रिजेम्बलेंस विद पेरेंट्स. Select the options that are true for both asexual and sexual reproduction from the options given below. First and second, second and third, third and fourth, second and fourth, and first and third. Option second and fourth. आगे चलते हैं. In a dihybrid cross, if you get 9:3:3:1 ratio, it denotes that the allele of two genes are interacting with each other. It is multigenic inheritance. It is a case of multiple allelism. The alleles of two genes are segregating independently. ऑप्शन नंबर कितना होगा? 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following should be chosen for best yield if one were to produce a recombinant protein in large amount? Laboratory flask of largest capacity, a stirred tank bioreactor without inlet and outlet, a continuous culture system, any of above. Option number 3, a continuous culture system. Which of the following would necessarily decrease the density of a population in a given habitat? Option 1, 2, 3, 4 आप सेलेक्ट करिए. ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. The term clone cannot be applied of offspring formed by sexual reproduction because offsprings do not possess exact copies of parental DNA. DNA of only one parent is copied and passed on the offspring. Offspring are formed at different times. DNA of parent and offspring is completely different. 5 का option first is correct. It is said that Mendel proposed that the factor controlling any character is discrete and independent. This proposition was based on the सारे ऑप्शन पढ़िए. इसका ऑप्शन 2 is correct. Observation that the offspring of a cross made between the plants having two contrasting characters shows only one character without any blending. An antibiotic resistant gene in a vector usually help in the selection of competent cell, transformed cell, recombinant cell, none of the above. Number 2, transformed cell. In a DNA strand, the nucleotides are linked together by option number 2, phosphodiester bond. What parameter are used for tiger census in our country's national park and sanctuaries? Pug marks and fecal pellets. In a fertilized embryo sac, the haploid, diploid and triploid structure are synergid zygote and primary endosperm nucleus, synergid antipodal and polar nuclei, antipodal, synergid and primarily endosperm, synergid, polar nuclei and zygote. बताइए. ऑप्शन 1 इज करेक्ट. synergid, zygote and primary endosperm nucleus. हैप्लॉइड है synergid, डिप्लॉइड है zygote, ट्रिप्लॉइड है primary endosperm nucleus. Question number 11. In a certain taxon of insects, some have 17 chromosomes and other have 18 chromosomes. The 17 and 18 chromosomes bearing organism are males and females respectively. Option 1 is correct.
नेक्स्ट है the transfer of genetic material from one bacterium to another through the mediation of a vector like virus is termed as transduction. Next है an inverted pyramid of biomass can be found in which ecosystem? Marine ecosystem. The outermost and innermost wall layer of microsporangia in an anther are respectively epidermis and tapetum. Climax community is in a state of equilibrium. With regard to mature messenger RNA in eukaryotes, 16 का option 2 is correct. Exon appear but intron do not appear in the mature RNA. The most important feature in a plasmid to be used as a vector is oocyte. Which of the following countries has the highest biodiversity? Brazil. The phenomena observed in some plants wherein parts of the sexual apparatus are used for forming embryos without fertilization is called apomixis. C-peptide of human insulin is a part of mature insulin molecule responsible for formation of disulfide bridges remover during maturation of proinsulin in insulin, which is responsible for the biological activity. 20 का option C correct. क्वेश्चन फिर से देख लीजिए. C peptide of human insulin is removed during maturation of proinsulin to insulin. Which of the following is not an invasive alien species in the Indian context? Cynodon, दूब घास जिसको कहते हैं. Function of filiform apparatus is to function. filiform apparatus में का फंक्शन क्या होता है? Guide the entry of pollen tube. While analysis the DNA of an organism, a total number of 5,386 nucleotides were found out of which the proportion of different bases were adenine 29%, guanine 17%, cytosine 32%, and thymine 17%. Considering the Chargaff rule, it can be calculated that option 2 is correct. It is a single-stranded DNA. ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है. The vas deferens receives duct from the seminal vesicle and opens into urethra as 24 का 2 is correct. Who amongst the following scientists had no contribution in the development of the double helix model for the structure of DNA? 25 का ऑप्शन नंबर 4 is correct. Michelson and Stahl.
Amongst the animal group given below, which one has the highest percentage of endangered species? Amphibian. Which of the following forest is known as the lungs of the planet Earth? 27 का ऑप्शन नंबर 4, रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। 27 का 4th। 27 क्वेश्चन नंबर फिर से ज़रा सा देखते हैं। लंग्स ऑफ प्लैनेट अर्थ पूछा। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज़ नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ? ये अमेजन रेन फॉरेस्ट है, इसका ऑप्शन 3 है, ये नहीं होगा, अमेजन रेन फॉरेस्ट। 27 का ऑप्शन नंबर 3 गलती से हो गया। आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। 28 का ऑप्शन नंबर 1 ऑड वन देखना है। फिम्ब्री इस्थमस इनफंडिबुलम लेबिया माइनोरा, ये तो उसके फैलोपियन ट्यूब के पार्ट हैं, और ये जो है एसेसरी एक्सटर्नल जेनेटिलिया का पार्ट है लेबिया माइनोरा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इन इकोलाई the lycopyrone gets switched on when? Lactose is present and it binds to the repressor. Question number 30. Which among the following is a set? Which among following is a set of bacterial disease? Option number 3 diphtheria, leprosy and plague. ये बैक्टीरियल, ये वायरल है, गलत। वायरल गोल्डन राइस इज 31 का ऑप्शन 3 करेक्ट है। और ट्रांसजेनिक राइस हैविंग जीन्स फॉर बीटा कैरोटीन। Increased IMR and decreased MMR in a population will result in decline in growth rate. Human chromosome with the highest and least number of genes in them are respectively option number 3 chromosome first and Y. What provides binding sites of RNA polymerase? 34 का 2 ऑप्शन promoter. GEAC stand for Genetic Engineering Approval Committee. Following statements are given regarding MTP. Choose the correct options given below. MTP are generally advised during first trimester. MTPs are used as contraceptive method. MTPs are always surgical. MTPs require the assistance of qualified medical professionals. 36 का ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, आप बताइए। 36 का ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। फर्स्ट एंड फोर्थ, इसका मतलब ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। विविपैरिटी इज कंसिडर्ड टू बी मोर इवॉल्व्ड बिकॉज। 37 का ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट।
The young ones are protected inside the mother's body and are looked after they are born, leading to more chances of survival. Assertion reason का क्वेश्चन आ गया है. Opioids are also opiates used to treat pain. Opiates और इसका रीज़न है ओपाइड्स आर द ड्रग विच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपाइड्स रिसेप्टर प्रेजेंट इन आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इसका असर्शन ये रीज़न दोनों ही यहाँ पे सही हैं. बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ये इसका सही है. इसका मतलब जो ये भी है ये भी सही है, ये भी सही है. अरे चला गया. Assertion totipotent cells are found in spores and zygotes. ये ऑप्शन ठीक है. रीज़न है टोटिपोटेंट इज एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल डिवाइड एंड प्रोड्यूस सेल ऑफ द डिफ्रेंशिएशन सेल इनटू द ऑर्गेनिज्म. ये सही है. मतलब बोथ असर्शन और रीज़न दोनों यहाँ पे ठीक है. नेक्स्ट है सिफिलिस इज एन इन्फेक्शन डिजीज कॉज्ड बाय ट्रिपोनीमा पैलेटम विद इन द स्टेज. और टी का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसमें? ए बी सी देखिए. Sore at the origin site of infection, skin rashes, swallowed lymph node and fever, severe medical problems and can affect the heart, brain and other organism of the body. 40 का ऑप्शन है फर्स्ट इज करेक्ट. फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड. The most accepted lines of descent in human evolution is option number 3 Ramapithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. साइटिडीन इज क्या है? साइटिडीन न्यूक्लियोसाइड. बायोगैस कंपोजिशन. बायोगैस इज कंपोज्ड ऑफ मेजरली 43 का ऑप्शन नंबर 3 मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. During DNA replication, the breaking of hydrogen bond is performed by 44 का ऑप्शन नंबर 3 helicases. Choose the incorrect statement. The Montreux Protocol या पढ़िए चारों. ऑप्शन कौन सा इसमें इनकरेक्ट है? ऑप्शन आर यूनिट में ऑक्सीजन कंटेंट नहीं, ये गलत है. यहाँ पे ऑप्शन यूनिट जो होती है वो ऑक्सीजन कंटेंट को मेज़र नहीं करती है. किसको करती है? ओजोन लेयर को. ओजोन लेयर की जो यूनिट होती है वो डॉप्सन होती है. ये इकोलॉजी का एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आप पढ़िए. फिर इसके बाद इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस दिए हैं.
Question number 46. The approaches to biological control includes 46 का option number 3 is correct. Preservation of natural enemies, predator and parasite that are already established in a area. Next है two diseases less likely to occur in a region with plenty of dragonflies are. Option number 2 is correct. Malaria and yellow fever. Dragonflies indicate positive ecological impact as 48 का option number 3. They help to decrease the probability of diseases spread by vectors. 49 है the most effective stage in the life cycle of dragonfly are that eradicates mosquito are. 49 का option 3 is correct. Nymph and adult. Next है releasing dragonflies in area where there is an outbreak of malaria disease can be an environmental friendly method of control. ये assertion है, ये इसका reason है. Dragonflies are dominant species which will not allow mosquito to reproduce. Option number ये देखिए ए तो ठीक है लेकिन बी जो है वो गलत है. ये सही है, बी इसका रीज़न गलत है. तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन जो है assertion is true but reason is false.